Students, today we learn about letters. We know that letters are two types, formal and informal. Letters are two types, formal and informal. Formal, all business letters. It carries letter to editor, placing an order, complaining letter, inquiry letter, official letter, job applications. And informal letters, personal letters. Business letter means when you want to complain at a large number, then you have to write editor. If you want to place an order, household articles, sports items, etc., for any organization for your personal purpose, then you write letter to the manager as and placing of order, complaining letter, inquiry letter. Suppose you want to get an admission in a institute, so you ask for the information or you use to give informations. Job application, if you want to apply for any job, then you write job application. Means these are formal letters. Informal letters, we used to write letters to friend, parents and any relatives. Means these are your personal letters. Letters carry 6 marks. In exams, there is 6 marks for the letters. Format 1 marks, content 3 marks, expressions 2 marks. Format. These informations are required to write any letter. First of all, we write sender's address, then date, then addressee address means receiver's letter to whom you want to write, that is addressee address, then subject, salutation, then body of letter, complimentary clause, designations, yours faithfully, like this. It means these informations are required to write as a format of a letter. Format में आपको ये सारी information देती हैं. So if you give such information, sender address, date, addressee address means receiver's address, subject, salutation, body of letter, complimentary clause as a designations and like yours faithfully. So if you write all in a proper manner, then you get 1 marks. For content, relevancy of ideas must be there. Present points we can use. Appropriate closing, we can give remarks or any suggestions if there is any complaint. So to solve that problem, we give suggestions. So such type of things carries in content. Expressions. Ideas should show relevancy. Your language must be polite and positivity. Simple language you have to write. Grammatically corrections, accuracy is considered. So 1 marks for content, 1 marks for format, 3 marks for content, and expressions carry 2 marks. 3 types or mean to say steps we have to use to get 6 marks. Now we will learn how we used to write a letter and which kind of format we use. First of all, sender's address like M90 Dilshad Garden, Shadra, Delhi. Date like this, we used to write 5 August 2020 or August 5 2020. Any type of date you can write. Means आप 5 August 2020 लिख सकते हैं या August 5 2020 भी लिख सकते हैं. Then receiver address, like if you want to give or write a letter to placing an order, suppose we will write the manager, organization name means suppose AK private limited, we can write here. Address, suppose that institute or that organization or that company is situated anywhere, means suppose Delhi, then we will write here Delhi. Then subject means application for job. If there is considered application for job, then we will write in a subject application for job. Complaining letter, तो complaining against such things वो लिख सकते हैं. उसके बाद salutation, respected sir or madam, we can use here respected sir or madam. Then body of the letter, फिर जो content आपको से रिक्वायर्ड है वो लिखना है. देन इन द लास्ट योर सिंसियरली नेम एंड
designations. Today we will discuss about job application. Suppose there is an information you get from reliable source or from any newspaper. You get to know that there is a post vacant in any organization, in any institute, in any school. So you are supposed to write a job applications. So how we will write it, we will discuss here. Means first of all you have to mention source by which you get to know about vacancy, post and education. It can be by newspaper or reliable source. So you can write by which you get that. Suppose you get an information from the newspaper, we can write here I with the reference to your advertisement published in the newspaper. Means that you have to give the special newspaper name. Means suppose the Times of India, the Hindustan, we can write. Or from reliable source I get to know about the vacant post of such in your institute. So this is the first you have to mention. Then mention the name of the post. Suppose like a teacher, we want to give an application, so we will write here that there is a post vacant of teacher, nursery teacher, PRT teacher, TGT teacher, art and craft teacher, we can mention. Then introduction of the candidate, means which kind of quality, where it is belonged. So such type of things are required as an introduction. Assuring points. Suppose you want to assure the organization that if a chance is given to you, then which kind of things will be there, that I will be perform my duty with sincerity, with full dedication. Such type of assuring point you can write here, means as a commitments of the candidates. Then you will also give your personal detail as a resume, as a biodata. It carries some points. First of all we will write here name, father's name, address, age, date of birth, contact number you have to give, educational qualification, means the vacancy required education qualification, means you should be earned and postgraduate. So we can mention here experience, how much years you are having as an experience. Hobbies, what kind of hobbies are there. Language, means how many languages do you know. Suppose you know Hindi, English, Tamil, we can write. French, we can write. German, we can write. Marital status, means unmarried or married, we can write such information. We also mention nationality, means we are Indian, so we can write nationality as an Indian. Reference means if you want to get the job of any organization, then you have to give the reference. means ऐसे people का reference देना जो आपको बहुत अच्छे से जानता है. अगर suppose आपके बारे में वो इंक्वायरी करना चाहे तो वो आपसे रेफरेंस मांगेगा 2 persons का, तो उस पर्सन से वो आपके बारे में क्लैरिटी इन्फॉर्मेशन ले सकता है. तो सच टाइप ऑफ थिंग्स वी डिस्कस टू राइट एंड लेटर. विच काइंड ऑफ फॉर्मेट we have to give as a format in the exam. There is an example I am having for you now. Suppose AKS International School, Indirapuram, New Delhi advertised in the Times of India regarding the post of a PGT English teacher, and you are Lalita and address is also given F31 Nirvana Complex, Delhi. So write an application for the job. Such kind of things, means such type of letter you will get in the exam, and such informations are given, and on the basis of such information you are supposed to write a letter as an application for the job in the exam. So how we will write it, let's discuss something. First of all we will learn about that sender's address. So sender's address are given here F31 Nirvana Complex, Delhi. This is the address of sender. So we can write here F31 Nirvana Complex, Delhi. Then date, we will leave a line, then we will write like this 26th May 2020. Then to whom means receiver. Addressee, address we will write here. Suppose an application is there, so we have for the job as a teacher, it means you have to write to any letter to the
So if we want to write an application to the principal, then we will write here like this: the principal, AKS International School, Indirapuram, New Delhi, because it is given in the advertisement that AKS International School, Indirapuram, New Delhi, advertised in the Times of India. तो इस स्कूल को रिक्वायर्ड है एक पीजीटी इंग्लिश टीचर की. सो वी विल राइट एन एप्लीकेशन टू दिस स्कूल प्रिंसिपल. सो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है उसी स्कूल का नाम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे. आप अगर अपने आप से लिखते हैं तो आपको कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा. देन योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड एज पर द रूल. सो सेम एड्रेस यू विल राइट हेयर एज ए सेंटर एड्रेस, F31 Nirvana Complex, Delhi. So in the similar way we will write here F31 Nirvana Complex, Delhi. Then we leave a line 26th 20 as a date we write. Then principal, which school? AKS International School, because this is the same school which required any English teacher. So subject we will write after the receiver address. Then we will write subject. We will write in this manner: application for the post of PGT English. Then salutation means sir. And now we will start here. In response to an advertisement in the Times of India, because which kind of source we use here to get about the news? The newspaper. So we will write here newspaper name, the Times of India. When we get on dated 19th May 2020. Today we will write here 26th May 2020. You will write here the date because you get the information earlier. क्योंकि आपने पहले से वो information मिली है तो आप वहाँ पे स्टार्टिंग में डेट आपकी बाद वाली होगी और यहाँ पे पहले वाली, क्योंकि आपने पहले पढ़ा. देन यू आर सपोज टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट. सो वी विल राइट हेयर द न्यूज़ अर्लियर व्हेन वी गेट इट. सो वी विल राइट हेयर ऑन डेटेड 19th May 2020. I come to know about the vacant post of a postgraduate English teacher in your institute. I want to offer myself for the same. Now you have to give your introduction, which kind of qualities you are having, so that they are compelled to give you दैट जॉब, ताकि वो आपकी क्वालिफ़िकेशंस और आपका एक्सपीरियंस या आपकी पर्सनालिटी को देखकर वो आपको जॉब देने के लिए कम मजबूर हो जाए. तो सच काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू मेंशन हियर. देन वी विल राइट इन दिस मैनर: आई वांट टू ज्वाइन द स्कूल बिकॉज इट इज़ वेल नोन रेपुटेड स्कूल ऑफ आवर एरिया. देन सम कैरेक्टरिस्टिक्स यू विल गिव: आई हैव डायनामिक पर्सनैलिटी, आई हैव ऑल क्वालिफिकेशन एज पर योर रिक्वायरमेंट, आई हैव द एक्सपीरियंस एज ए हेड ऑफ, या हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेटर ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट. आई एम रिजल्ट ओरिएंटेड. रिजल्ट ओरिएंटेड मीन्स यू ऑलवेज कंसर्न अबाउट द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. आप अपने बच्चों के लिए काफ़ी पॉजिटिव होते हैं कि भी आपके बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो आप यहाँ पे एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं. सो इफ़ यू गिव मी अ चांस देन आई एश्योर यू दैट आई विल गिव माई सिंसियर डेडिकेशन इन द फेवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स दीज आर योर कमिटमेंट्स. अगर आप उसे चांस देंगे तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो जाएंगी. मैं अपना पूरे डेडिकेशन से काम करूँगा. और आप इसकी जगह ये वैसे भी लिख सकते हैं: आई शैल नेवर लीव नो स्टोन अनटर्न्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्कूल. कि भी मैं आपके स्कूल के बेटरमेंट के लिए जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो सारी करूँगा, अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ूँगा. इफ़ माई एप्लीकेशन इज़ फाउंड वर्दी ऑफ एन इंटरव्यू. अगर आप इंटरव्यू के लिए मेरी एप्लीकेशन को जो आपकी रिक्वायरमेंट है उनको आप वर्दी मानते हैं, मीन्स सच टाइप ऑफ आर सेटिस्फैक्ट्री इफ़ यू कंसर्न, देन आई शैल बी अवेलेबल एट ए ब्रीफ नोटिस. आई शैल बी अवेलेबल फॉर इंटरव्यू at a brief notice. I enclose my biodata within application. In the last, yours faithfully, Lalit or Lalita. Means which name is given in the क्वेश्चन पेपर यू हैव टू राइट द सेम. आपको जो क्वेश्चन पेपर के अंदर एप्लीकेंट का नाम लिखा जाता है आप वही लिखेंगे. आप अपनी तरफ से अपना नाम नहीं लिखेंगे, अदरवाइज आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा. सो सच थिंग्स वी विल use to write as an application for a job. After the salutation, after the yours faithfully and
because you have mentioned here is that you also enclose your resume, biodata we can say. Then which such type of things you will write here? Name, yours name, then father's name, your address where you belong to, then age, date of birth you can write here, contact number you will write here. You will also give your educational qualification. Suppose you pass 10th from CBSE in 2000, आप अपना ईयर भी दे सकते हैं, आप अपनी परसेंटेज भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप ये लिखते हो यानी कि भी 85 मार्क्स है, इट डिपेंड्स ऑन यू. देन यू कैन आल्सो हियर पास 12th मीन सीनियर सेकेंडरी एग्जाम आपने कब और कितने परसेंटेज में किया था, आप ऐसा मेंशन कर सकते हैं. देन बिकॉज आपकी टीचिंग लाइन में है तो बीए का अभी आप रेफरेंस देंगे, यूनिवर्सिटी का रेफरेंस देंगे, देन फिर एमए का देंगे, बीएड का दे सकते हैं. अगर आपकी कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है, सपोज अगर आपको कंप्यूटर वगैरह का नॉलेज है तो आप इसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर मेंशन कर सकते हैं. देन यू विल आल्सो राइट लैंग्वेज नोन, आप कौन कौन सी लैंग्वेज को जानते हैं. यू कैन राइट इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, तमिल, इट्स योर चॉइस. हॉबीज़, विच काइंड ऑफ हॉबीज़ यू आर हैविंग, रीडिंग हो सकता है, फोटोग्राफी हो सकता है, ड्राइविंग हो सकता है, कोई भी आप हॉबीज़ को यूज़ कर सकते हैं. नेशनलिटी, बिकॉज वी आर इंडियन सो वी विल राइट हेयर इंडियन. एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस लिख सकते हैं. अगर आपको कई ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है तो आप मेंशन भी कर सकते हैं. सपोज 2 years एक्सपीरियंस एज ए पीजीटी इन साउथ पॉइंट, आप 1 year एक्सपीरियंस इन JLN स्कूल. सो यू कैन राइट separate experience. If you are not having, then no need to write as an experience. Then pay, आप अपनी सैलरी के बारे में, पे के बारे में भी लिख सकते हो. आप ऐसे भी लिख सकते हो नेगोशिएबल, मतलब ये आप वहीं पे डिसाइड कर सकते हो, इस तरीके का भी दे सकते हो, या आप ऐसे मेंशन करते हो एज पर द गवर्नमेंट्स रूल. तो सच थिंग we will write in the resume: name, father's name, address, age, contact number, education qualifications, language, hobbies, nationality, experience or pay. And we also ask about the reference. Suppose डॉक्टर अशोक मित्तल, मेडिकल ऑफिसर, ESI, मोती नगर, न्यू दिल्ली. मीन्स आप किसी भी 2 persons का रेफरेंस देंगे ना, कि भी अगर आपसे कोई चाह रहा है कि भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना जा रहा है तो आप अपने किसी भी रिलायबल 2 persons का रेफरेंस दे सकते हैं, ताकि वो जो उनको आपसे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको लगे तो आप इस तरीके के 2-3 people जितना भी आप चाहें आप उनको रेफरेंस दे सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द पैटर्न हाउ वी विल राइट एन एप्लीकेशन फॉर job. I hope you will understand it. Thank you.